सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अज सौरभ अग्रवाल दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ना कोई नवी इन्फॉर्मेशन देने वास्ते लाइव सेशन कर रहे हैं। Today I'm doing this live session to update you on the new visas which are being proposed by Australian government, and they are thinking to release them in the month of November 2019. So what's it all about? So I'm going to discuss this with you guys today. Sab to pehla I'll be speaking in Hindi and English and Punjabi so that most of you can understand what I'm talking about. ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। I'll be updating you on that. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, if you have watched my previous videos you would have realized that I was focusing that one day this general skill migration gonna go away and it will be replaced by a new employer visa, and that gonna happen very soon, guys. There is a clear indication that employers in regional areas are struggling, and they've been forcing Australian government to actually release a plan where most of the employers will get a proper workers to work for them, which includes crop farmer, all these farming occupations, small hand jobs like bookkeeping, accounting, clerks, low level occupations. So you need to focus on that. There are a lot of things are happening, or we're going to talk about this today. So aj aapa gal karange ki ho raha hai and why this is happening. There are good news coming, so I believe this visa will bring a lot of good news for all those people living in regional area, especially in South Australia, Northern Territory and Tasmania. So the key focus of Australian government is on Northern Queensland, Tasmania, South Australia and Western Australia. Guys, before we start, they have proposed that Perth, Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast would be excluded from this program, from this regional program, and moving ahead they are thinking to introduce two streams. The first stream would be for an employer, where you would be working for an employer and then the employer would be sponsoring you under that occupation. Maybe that visa might be called 489. Hypothetically, let's consider it as a new 489 visa. So under new 489 visa, there would be an employer who would be sponsoring you, and you must work in regional area for this employer for 3 years before you can apply for your permanent residency under a new category which will be released in 2020. And there would be a second category for family sponsored. So if you have anyone who's living in regional area willing to sponsor you, then basically they will sponsor you. You follow their conditions, you live in regional area for 3 years, and then you can apply for your PR. What is the difference between current 489 and the upcoming regional visa? Currently, if you live on 489, the people, first thing, you should not be scared that the new visa is coming up and then you have to live in regional area for 3 years. Guys, at the moment, you can still wait till November. So the people who have not applied, if they make an application in July or before November, and if they are already holder of 489 visa, then they can apply for 887 visa, which will be in effect during that time. So after completion of your 2 years, living in regional Australia and working full time in regional area during that duration, then you are eligible to apply for 887. You present all your documentation, present them, and with the evidence and argument that you have been living in regional area for 2 years and working full time during that duration in regional area, that satisfies your condition for 887 and eventually get permanent residency granted. Now they are proposing under new provisional visa is that you have to work with an employer, or you have to live in regional area for 3 years, and the condition of 1 year may change to 2 years. So if you work in Queensland for 2 years, then basically regional Queensland, for example, for 2 years, then you are eligible to apply for this visa. I'm now going to talk about this more in Hindi or Punjabi. So basically दोस्तों, क्या होने जा रहा है, अभी आप देखेंगे कि जो नया रीजनल वीजा आ रहा है उसमें बहुत सारी ऑक्यूपेशंस होंगी, ओवर 450 ऑक्यूपेशंस है उसके अंदर,
और मुझे जो मेरे को लगता है आपको इसके लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं होगी, जैसे 457 वीजा था. सो दिस इज वेरी सॉर्ट ऑफ वेरी सिमिलैरिटी इन क्लोज टू 457 वीजा. अभी आपने पीछे देखा निराशा हुई थी जब क्रॉप फार्मर की ऑक्यूपेशन को, बहुत सारी ऑक्यूपेशंस को, 36 नियरली ऑक्यूपेशंस को मूव कर दिया गया था शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट से रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट में. बट अब जैसे कि ये वीजा आएगा तो फार्मर्स को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आपका TSS ROL भी आ रहा है. TSS ROL मींस कि अगर आप टेम्पररी शॉर्ट स्टे डालना चाहते हैं वीजा और आपकी ऑक्यूपेशन ROL में है, देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर न्यू वीजा. सो दोस्तों ये जो नया वीजा आ रहा है बहुत सारी चीजें प्रपोज होने वाली है. आपको अगेन 457 था जैसे, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू हैव अ मैंडेटरी एक्सपीरियंस इफ यू हैव अ रेलेवेंट क्वालिफिकेशन. वही होने वाला है इस वीजा के अंदर. इफ यू डोंट हैव होल्ड अ एक्सपीरियंस then you must have a qualification, or if you don't have a qualification then you must hold an experience. So that is a major requirement. मुझे कहाँ लगता है कि इसमें जो English requirement है वो भी exempt होगी. So you don't need to meet certain English language requirements, especially in the cases of trade occupations, farming occupations and low level job categories जैसे कि डामा में हुआ. So same thing happened in the डामा. So a lot of occupations might not need to fulfill English language requirement. And then the second thing would be $54,000 package. So there would be a concession for TISMET. So $54,000 का जो पैकेज है which falls under TISMET, आपको वो मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी मुझे सुबह से काफी कॉल आए जब हमने ये फेसबुक पे अपलोड किया. आज we have uploaded that the new regional visa is coming and what's going on with that new regional visa, how it's going to impact your future, how it's going to impact Australian economy. So I've got a lot of calls. The people who have already applied for 489, जिन्होंने 489 already apply कर रखा है या जुलाई में apply करेंगे, उन पे 2 ईयर की ही रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है. 2 ईयर में 1 ईयर आपको रीजनल एरिया में रहना है. That's it. अगर आप उसके बाद करते हैं then the residency requirement might change in November if you apply. Guys, जो हम अभी बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक प्रपोजल है, एक बिल बनेगा. Both the parties, either Labour or Liberal, they are actually supporting the regional growth क्योंकि सिडनी मेलबर्न में इतना overburden हो गया है. The transportation system is burdened. City is burdened with the parking slots there. The people cannot find a parking slot there. उसको देखते हुए बेसिकली इन्होंने ये जो स्टेप उठाया है, स्कॉट मॉरिसन ने इसको रिलीज किया. पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे facebook.com/eduembassy पे आप देखेंगे हमने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है. वहां पर सोर्स भी बता रखा है कि आप कौन सा सोर्स देखें ताकि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले. और जो इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ये मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कोई रिलायबल सोर्सेज से होती है, आइदर ये होम अफेयर की वेबसाइट से होती है या स्कॉट मॉरिसन दी गई द्वारा स्पीच के थ्रू होगी. सो बहुत सारी चीजें हो रही हैं. लास्ट वीक आपने देखा द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डामा and South Australian Dama is about to get released. Western Australian Dama got over 70 occupation which can be accessed by overseas resident as well as the people living in Australian resident. अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है? Where we guys are struggling? We are struggling that we came here on student visa, we did our qualification, we haven't got 2 years of experience. What now? So I think so. This is a gap. This void is being filled by the upcoming visas. मैं आपके क्वेश्चंस का भी आपको जवाब दूंगा, पर इससे पहले मैं अपनी पूरी एक समरी खत्म कर लूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस पे आऊंगा. सो दीज आर द 2 visas which are coming in under 2 different stream. 489 नवंबर में they are proposing it will be abolished. Lot of new occupation will be released in regional Australia. इसका कोटा भी काफी बड़ा है, आप इस कोटे के अंदर यूज कर सकते हैं. और साथ ही साथ द गुड थिंग इज दैट यू मस्ट मेंटेन द रेजिडेंसी फॉर एटलीस्ट 3 years. एम्प्लॉयमेंट आपका जो है वो 2 year तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा. अब मैं एक और आपको अपडेट दूं 485 को लेकर. जो नया 485 आ रहा है, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन इन रीजनल यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट से पढ़े हो और यूनिवर्सिटी और आप सनशाइन कोस्ट में ही रहे हो, सनशाइन कोस्ट इज बेसिकली अ रीजनल एरिया. सो इफ यू हैव लिव्ड, studied and worked in Sunshine Coast, which is a regional area, for 2 years, and then you get a post-study work visa. During that post-study work, which is for 2 years, usually it's for 2 years. So once you prove that you have lived for
2 years, again study, live and work in regional area, then you will get an extension of 1 year. So आपको टोटल 3 साल का वीजा मिलेगा. जो मेट्रोपॉलिटन में रहेगा उसको सिर्फ 2 साल का वीजा मिलेगा. सो देयर इज एन एडवांटेज ऑफ एक्स्ट्रा 1 ईयर. एक्स्ट्रा 1 ईयर में आपको बहुत सारी जो चीजें हैं आप कर सकते हो. और साथ ही साथ they are proposing that they will give additional 5 points to people who have lived for 5 years in regional Australia. So दोस्तों, अगर आप 3 साल 485 पे रहे हो, 2 साल आपने मास्टर्स किया, टोटल आपके 5 साल हो गए, तो आपको 5 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेंगे. रीजनल एरिया में पढ़ने के 5 पॉइंट तो मिल ही रहे हैं, और उसके अलावा भी 5 पॉइंट मिलेंगे. सो यू आर गेटिंग 10 पॉइंट्स इफ यू स्टे इन रीजनल एरिया फॉर 5 गुड ईयर्स. इसी के साथ साथ 485 का जो मैंने आपको बताया एक्सटेंशन. सो यू हैव टू प्रूव डिपार्टमेंट दैट यू हैव लिव्ड देयर, यू हैव नेवर मूव्ड टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया. सो अभी रीजनल यूनिवर्सिटीज में भी बहुत वीजास लग रहे हैं. आपने देखा होगा रिसेंटली चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी एंड यूनिएसए ने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया था पीछे, जिसमें उन्होंने बोला कि दे आर गेटिंग वीजा अप्रूवल फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज, जिसमें चाइना, नेपाल और इंडिया को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना गया था. सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड. आप क्या करना चाहते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्वींसलैंड आते हैं, पढ़ाई करने के बाद दे वांट टू मूव टू आइदर नॉर्दर्न टेरिटरी और टैस्मेनिया. दैट्स नॉट द वे गाइस. यू हैव टू स्टिक वेयर यू आर लिविंग. देयर वुड बी लॉट ऑफ ऑप्शंस. और आज का ये सेशन करने का मेन मकसद क्या था कि अगर आप एलिजिबल होते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है वो 489 की अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं. दे थिंक दैट 489 इज वेस्ट ऑफ देयर टाइम. I'm telling you right now, if you're gonna miss this opportunity this time, you'll be stuck. And if you are ready to live in regional area for 3 years, then it's a good opportunity again for you, because there would be access to a lot of information. Now I'm gonna go through a lot of questions as I'm getting a lot of questions. So मैं आपके क्वेश्चंस के बारे में आपको बताता जाऊंगा और आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में धीरे धीरे देता जाऊंगा. Yeah. So I've got a question from one of my friend. She's asking what gonna happen if someone has completed diploma of horticulture with them. Again, as I've told you, regional area में बहुत बड़ा regional area में बहुत सारी occupations available होने वाली हैं. And it gonna happen is either experience or qualification. That's what they have proposed. That's what I have got. अगर आपका student horticulture पढ़ा हुआ है and then basically they want to go and they have got an employer who's willing to sponsor them in regional area. This guy want to live in regional area for 3 years, want to access the list for regional occupation list, which is under TSS or through 489. Then here he go, like he basically meets the requirement as specified by the law. और बहुत सारी occupations ऐसी हैं जिसके लिए skill assessment की जरूरत नहीं है. So guys, this was the session which I am been doing. I'll tell you the next big areas to focus. The next big cities would be in Queensland, would be either Cairns and Sunshine Coast. Forget about New South Wales, forget about Victoria. I can't see any possibility there. But if you look at South Australia, a lot of people from New South Wales who are on 489 are actually moving to South Australia, because it's a big regional town where you can get a lot of opportunities, multicultural society, a very good government, and they are doing a lot for their people. Same thing with Northern Territory and Tasmania. Northern Territory seems to be very flexible now. They are inviting a lot of 489 applicants to apply for their PR. Western Australia, I don't see a plan, but as Dama would be in Goldfield, Esperance area, the Dama would be applicable. So you can access a lot of occupations through Dama. कम्युनिटी वर्क, अब मैं आपको ऑक्यूपेशनल बता दूं जो बड़े होने वाले हैं फ्यूचर में. एंड माइंडेड गाइस, डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर, कम्युनिटी वर्कर, दे गोना बी बिग इन नेक्स्ट few years. So keep watching us if you want to have more questions, want to know more ideas, and want to share your thoughts. I'm more than happy to answer your all the queries. You can IM us, and in addition to that, we are doing a very big seminar next week on Wednesday at ECA Education Center of Australia. So आप Education Center of Australia जो कि ब्रिस्बेन सिटी में है, they do professional year program. आप वहाँ पर आए, I'll be guiding you what they can do and how you can do if you are already holding a skill assessment for IT profession and accounting profession. Time to finish it off, guys, and thank you very much. Have a good night, and we'll see you next week. Bye bye.